हेलो बेटा, कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल बेटा? होप यू आर डूइंग वंडरफुल एट योर एंड. So there is some delay of 5 to 10 minutes. Apologies for that, beta. So what we have studied in the last session? Can you please tell me the topic, beta? What we have studied in the last session? Shyam Kumar ji, good evening. Rashmi, good evening. Shrivani, good evening, beta. कैसे हैं आप तीनों बेटा? So in the last session, beta, we have completed a very important topic in standard costing under advanced variances, and that is the planning and operational variances. Traditionally, what we will do, we will compare the actual with the budget oblique standards. When we are comparing actual with the budget, when there is a time dependent variance, such as fixed overhead and sale. But when there is a production dependent variance, we compare the actual with the standard. Material variances, labor variances, and variable overhead variances. So in traditional variances, we are comparing actual detail with the original standard that has been set at the start of the year, irrespective of whether there has been any changes during the period or not. Okay. And now what we will do in planning and operational variances, if there is any changes dramatically or drastically during the period which has not been considered while preparing the original budget, then it will be illogical to compare actual data with the original data. So what we will do, we will make one more budget known as revised standard, and in that we will consider the current market situation, and based on that we will determine the revised budget. Okay, so in planning variance, we will compare the original standard with the revised standard. There is no role of actual in planning variance. Planning variance is also known as uncontrollable variance. And in case of operational variance, what we will compare? We will compare actual detail with the revised standard, not original standard, revised standard. मिथुन गुड इवनिंग बेटा. भौमिक गुड इवनिंग. भौमिक ने एक क्वेश्चन पूछा है, फॉर इफ देयर इन कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल प्लानिंग वेरिएंस. ऑपरेशनल वेरिएंस तो बेटा हमेशा कंट्रोलेबल होता है ना, उसमें कभी भी अनकंट्रोलेबल पोर्शन नहीं आएगा. दैट विल ओनली अराइव इन केस ऑफ प्लानिंग वेरिएंस, इन केस ऑफ चॉइस ऑफ रॉ मटेरियल, एज इन क्वेश्चन नंबर 1 and question number 4. But in operational variance, that will always be the controllable price variance. Okay, Bhaumik? So I have given you one assignment, beta. Can you please tell me the name of that assignment? I have given you an assignment that before this session you have to complete that part. How many of you have completed, revised that particular topic? Can you please tell me, beta? Because without that we will not be able to start that particular advanced variances. How many have completed that assignment? जल्दी से बताए बेटा, किन किन बच्चों ने वो असाइनमेंट करके आया है. लर्निंग कर. Yes, Rashmi, I have requested for learning curve because in learning curve there is one question on learning curve which requires that is a combination of learning curve and variance analysis. So unless and until beta you have revised, can I assume that each and every one have revised the same? Yes, beta. Yes, Shivani. You have correctly said, beta. There can be uncontrollable usage variance also, undoubtedly. So Rashmi, hope you have done it. Bhaumik, you have done it. Shivani, you have done it. Okay, beta. Mithun, I think we have taught that one in the lecture of chapter number 3 or chapter number 4, beta. Okay, beta. So I am assuming that each and every student has completed that learning curve, because it's not quite possible to once again revise that one.
because we have already revised the same. So there was a question on that particular point, learning curve and standard costing. आइए बेटा देखिए, give the heading in your copy, learning curve with standard costing, या ऐसा लिख दो, standard costing with learning curve. I mean page number beta 11.10, 11.10. Okay, can I start this question? 11.10. देखिए बेटा, City International Company is a multi-product firm and operates standard costing and budgetary control systems. So the name of the client is City International Company. They are operating standard costing system. During the month of June, firm launched a new product, and I already told you at the time of chapter number 3 or chapter number 4 that learning curve will be applicable whenever a new product is being produced by a worker. Okay, an extract from performance report prepared by senior accountant is as follows. They have given us the budget, they have given us the actual. What is the output beta? Output is budgeted 30 unit, actual is 25 units. Direct labor hour 180.74 labor hours are budgeted, while the actual labor hours are just 118. So can you tell me beta, by comparing this two detail, I don't want the numerical answer, just I want whether the labor efficiency variance will be favorable or adverse, because in the budget there are 180 hours while we have utilized just 118 hours for the output. So whether the efficiency variance will be favorable or adverse, just communicate. I don't want the numerical answer. Just communicate beta whether the whether the variance will be adverse or favorable. We cannot compare this two detail. 180 and 118 are not at all comparable beta. You are doing the same mistake which I have told you in the very first session of standard costing, that whenever you are calculating material, labor and variable overhead variance, actual is to be compared with standard. This is not the standard beta, this is the budgeted unit. Actual output is 25 unit. So we have to find out how many hours are required to manufacture 25 units. Then those standard hours will be compared with 118 hours to find out the efficiency. You know? This hour cannot be compared because this is the budgeted hour for 30 unit, while our standard will be prepared based on the actual output. Clear why? So direct labor hour, बताओ बेटा इससे क्या निकाल सकते हो आप? इस इंफॉर्मेशन से क्या निकाला जा सकता है? I don't want the numerical answer, just I want the answer in language term. What we can find out through this two detail. It's very easy beta. Please communicate fast. It's very simple beta. We can find out the budgeted rate of labor hour. What is the budgeted rate of labor hour and what is the actual rate of labor hour? And mind it beta, budget and standard are interchangeable except in totality. So whatever budgeted rate of labor is there, the same is called as standard rate of labor. Okay, we have already dealt with that point. अब बढ़ते आगे. Senior accountant prepared performance report for new product on certain assumption, but later on he realized that this new product has similarity with other existing product of the company, है ना? तो जब सीनियर अकाउंटेंट ने परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकाला था तो उसने मान के चला था कि प्रोडक्ट ऑल टुगेदर न्यू है. Later on he realized that this product has similarity with other existing product of the company.
Accordingly, the rate of learning should be 80% and that the learning would cease after 15 units. I have already told you, whenever the work is done by a new worker on a new product, for the initial unit, there should be a learning curve. After production of some unit, there will be the stability curve. मतलब अब वहां पे हमारे लेबर आवर्स कम नहीं होने वाले. तो रेट ऑफ लर्निंग 80% होनी चाहिए और लर्निंग कितने यूनिट के बाद फीस हो जाएगी? 15 यूनिट के बाद फीस हो जाएगी. अदर बजट assumption for the new product remain valid. The original budget figure are based on the assumption. ये जो बजट दिया है ये किस assumption पर based है? That the labor has learning rate of 90% and learning will cease after 20 units. And thereafter the time per unit will be the same as the time of the final unit during the learning period. ये हमने सीखा है बेटा. अगर 20 यूनिट के बाद लर्निंग स्टॉप हो जाती है तो जो यूनिट नंबर 20 में लेबर आवर लगे, यूनिट नंबर 20 में लेबर आवर लगे हैं, वही लेबर आवर्स आगे भी लगेंगे. और फर्स्ट यूनिट को बनाने में कितना समय लगता है? 10 आवर्स लगता है. ओके. Show the variance that reconcile the actual labor figure with the revised budgeted figure for actual output in as much detail as possible. Okay. लर्निंग इंडेक्स दिया है 90% का और 80% का, 0.15 to 0.33 का. ये पूरा लॉग टेबल आपको दिया हुआ है बेटा. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू मस्ट रिवाइज द लर्निंग कर्व. होप यू रिवाइज द सेम बेटा. अब पहले उसके पहले भी मुझे ये बताओ, इस एक्चुअल डिटेल को मैं 90% लर्निंग कर्व के साथ कंपेयर करूंगा या 80% कर्व के साथ कंपेयर करूंगा? एंड विथ फुल लॉजिक बताइएगा बेटा मुझे, है ना. और चॉइस आपके पास एक है, या तो इस एक्चुअल डिटेल को मैं 80% लर्निंग आवर के साथ कंपेयर करूंगा या 90% के साथ कंपेयर करूंगा. एंड डोंट हैव अ चॉइस. द लॉजिक इज क्लियरली गिवन इन द रिक्वायरमेंट पार्ट इफ यू प्रॉपरली रीड आउट दैट वन. प्लीज कम्युनिकेट योर आंसर बेटा. जल्दी से आंसर कम्युनिकेट कीजिए बेटा. 80%. ओके. यस बेटा 80%, क्योंकि यहां पे रिक्वायरमेंट पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है और वो है रिवाइज्ड बजटेड फिगर. रिवाइज्ड बजटेड फिगर है ना. रिवाइज्ड बजटेड फिगर के साथ आपको करना है, मतलब ये 90% आपके कोई काम का नहीं, आपको 80% लेना है. नाउ कैन यू टेल मी बेटा, whatever variance you are computing, whether that is a planning variance in this question or operational variance, please take your time and then reply to me whether that will be a planning variance or the operational variance. Definitely it's an operational variance because you are comparing the actual detail with the revised detail, and actual detail when compared with the revised detail will be an operational variance. Okay, so चलिए बेटा ध्यान से देखिएगा हमें क्या चीज यहाँ पे फाइंड आउट करना है. There is a single category of labor undoubtedly. तो कितने कॉलम बनेंगे बेटा? 3 कॉलम बनना है. कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 and column number 3. There will be 3 columns.
it will be hour multiply by rate, hour multiply by rate, and hour multiply by rate. पहले में जो hour आएंगे that will be the revised standard hour, because हम operational variance निकाल रहे हैं, and the question itself communicate us that you have to compare the revised standard with the actual one, है ना? And then it will be the actual hour, last में actual hour और यहाँ पे revised standard hour. हालांकि standard rate revise नहीं हुआ है, फिर भी उन्होंने दिया हुआ. तो actual hours हमें पता है बेटा, actual hours we know that it is 118.08 और ये कितना है 79,704, ये हमें दिया हुआ है 79,704, ये हमें ऑलरेडी पता है. 118.04 स्टैंडर्ड आवर आप बहुत बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. देयर इज नथिंग स्पेशल इन फाइंडिंग आउट स्टैंडर्ड आवर. लीजिए बेटा 1,19,288 डिवाइडेड बाय 180.74 कितना आ रहा है 660 रुपी. इफ द स्टैंडर्ड आवर रेट, वो बजटेड आवर है, बट बजट एंड स्टैंडर्ड आर इंटरचेंजेबल एक्सेप्ट इन टोटलिटी, ये मुझे पता है. बस सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पता लगाना है, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर एट द एफिशिएंसी एट द लर्निंग रेट ऑफ 80%. जैसे ही वो आप पता लगाएंगे ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विथ लर्निंग कर्व. सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज गिवन टू यू एक्सेप्ट द रिवाइज स्टैंडर्ड आवर. दो किसके हिसाब से निकलेगा, based on learning rate of 80%. So I'm giving you some time, beta. You already read out the same learning curve content, and please provide me the answer of revised standard hour. And I think you should require minimum 4 to 5 minutes, because there are calculations. First of all, you have to calculate y for 15 unit, then for 14 unit, then you will find out the time required for unit number 15. So there will be certain time period to find out the revised standard hour for 25 minutes. Okay, so I'm giving you enough time, beta. Minimum I am giving you 5 minutes so that you can have enough time to provide me the answer based on the learning curve. Okay, chaliye.
Last beta 2 minutes are available with you. Try to provide with the answer. First of all, you have to calculate the average time for 15 units, then average time for 14 units, and then you will be able to find out what is the time required to produce unit number 15, so that from unit number 16 to 25, the same labor hours can be taken that has been consumed in producing unit number 50. Okay. Shrivani has provided me the answer. Dikshit has provided me the answer. Okay, beta. Just I am waiting for 1 more minute, and then we will start discussing how the answer will be calculated. ओके बेटा, कैन आई स्टार्ट? तो देखिए क्या कैलकुलेशन रहेगा, पहले हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं ना. सो हाउ टू कैलकुलेट रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 25 यूनिट्स. ओके, तो सबसे पहली स्टेप होगी बेटा इसमें, और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, whenever you are calculating the hour, whether by formula method or by the doubling approach, the answer will always be the average hours. So first of all,
you will find out average labor hours per unit. Already I have written average for already it is per unit, but still for more clarity I have written per unit again. Average labor hour per unit for 15 units. 15 unit. 15 unit क्यों? Because after 15 unit the learning will stop. Okay. And then in step number 2, I will find out average labor hours per unit for 14 units. And then point number 3, I will find out total labor hours for 15 units. ये कैसे आएगा बेटा? Step number 1 multiply by 15 units. Okay, and in step number 4, it will be total labor hours for 14 units. It will be step number 2 multiply by 14. So in step number 5, what we will find out? Time required for unit number 15. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 15वीं यूनिट के लिए आप समय निकाल रहे हो. ये कैसा आएगा बेटा? 3rd minus 4th. बेटा, I am not explaining the same, just I am guiding you because already we have completed this topic, है ना? So, and now the most important point, revise standard hour for 25 units कैसे आएगा? तो देखिए, it will be step number 1. नहीं, स्टेप नंबर 1 है. स्टेप नंबर 3 में फर्स्ट 15 यूनिट का आ गया. फिर जो स्टेप नंबर 5 ने आपने आंसर निकाला है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम यूनिट नंबर 16 टू यूनिट नंबर 25. तो 16 से 25 के बीच में हाउ मेनी यूनिट्स यू आर हैविंग? 10 यूनिट्स. सो दिस इज द फॉर्मेट टू फाइंड आउट द रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर फॉर 25 यूनिट्स. In this question, it is the question of not of standard costing basically it's the question of learning curve. Standard costing is hardly applicable for 10 to 20% because each and everything is available in the question except the revised standard hour. ठीक है बेटा, चलिए बढ़े आगे. Any doubt in this point? अब आते हैं बेटा फिर नए कंसेप्ट पे. तो ये टॉपिक अपना खत्म होता है कि हाउ वी विल कैलकुलेट द स्टैंडर्ड वेरिएंसेस इन अ लर्निंग कर्व एनवायरनमेंट. अब हेडिंग दीजिए बेटा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वेरिएंस एनालिसिस इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. वेरिएंस एनालिसिस इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. वेरिएंस एनालिसिस इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. सो एक बार मैं आपको पढ़ने का समय देता हूं बेटा, बिकॉज रीडिंग ऑफ द कंटेंट हैज नो सब्स्टिट्यूट. जितना आप अपने लेवल पे समझ पाएंगे दैट इज मच बेटर फॉर यू फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, रिटेंशन पर्पस. सो आई एम गिविंग यू सम टाइम. ये तीनों पैरा आपको ना सिर्फ पढ़ना है बल्कि यू हैव टू इंटरप्रेट द सेम एंड देन आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग हाउ वी विल फाइंड आउट द वेरिएंस इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. ठीक है बेटा, तो अभी आपके पास समय है करीबन आई विल गिविंग यू 4 to 5 minutes for just 3 para because you don't have to read out the same, you have to interpret the same. Okay, chaliye.
ओके बेटा, पढ़ा आपने? तो देखिए क्या बोलता है ये, दो मेथड होती है ओवरहेड को रिकवर करने के लिए. द फर्स्ट मेथड इज द ट्रेडिशनल मेथड फॉर रिकवरी ऑफ ओवरहेड एंड द अदर मेथड इज एबीसी मेथड ऑफ रिकवरी ऑफ ओवरहेड. तो चेक कीजिए दोनों में क्या होता है बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा. दोनों में क्या होता है, बहुत ध्यान समझिएगा. अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड की बात करता हूं तो ट्रेडिशनल मेथड ओवरहेड को सिर्फ दो पार्ट में बाइफरकेट करता है. ट्रेडिशनल मेथड ओवरहेड को दो पार्ट में बाइफरकेट करता है. पहला है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस और दूसरा है फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंसेस. अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल मेथड जो ओवरहेड है, दैट इज द इनडायरेक्ट कॉस्ट है, उसको दो पार्ट में बाइफरकेट करता है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस एंड फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंसेस. जबकि अगर हम एबीसी मेथड की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द एबीसी मेथड, तो एबीसी मेथड ओवरहेड को कभी भी दो पार्ट में बाइफरकेट नहीं करता कि ये वेरिएबल ओवरहेड है या फिक्स्ड ओवरहेड है. ये ओवरहेड को मल्टीपल एक्टिविटीज में बाइफरकेट करता है. एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 3, एक्टिविटी नंबर 4. ये एक्टिविटी वाइज उसे बाइफरकेट करता है. कौन? एबीसी मेथड. तो जब भी हम एबीसी मेथड अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं ना, तो हम ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड वाइज नहीं निकालेंगे. हम वहां पे जो भी वेरिएंस निकालेंगे वो एक्टिविटी वाइज निकालेंगे. ये स्टेटमेंट आप कॉपी करो बेटा, फिर मैं कुछ इसमें लिखाता हूं आपको. प्लीज कॉपी दिस स्टेटमेंट. Okay, beta, have you written the same? Now write down. If the organization has applied the ABC method, if the organization has applied the ABC method for recovery of overhead, if the organization has applied ABC method for recovery of overhead, comma, then the variances will be computed. Then the variances will be computed separately. Then the variances will be computed separately for each and every activity. So stop. Next line में लिखे, and for every activity, comma, we will find out, and for every activity, we will find out, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेगा एक्सपेंडिचर, इन्वर्टेड variance, expenditure variance, and again in inverted comma efficiency and efficiency variance. एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड एफिशिएंसी, हर एक्टिविटी के लिए आपको रेट निकालना है. ठीक है बेटा, चलो ध्यान दीजिए. अब आप जब हम एबीसी की बात करते हैं
तो हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं बेटा एबीसी में टू फाइंड आउट द एबीसी रिकवरी रेट। कुछ याद आ रहा है? हम यहाँ पे एबीसी रिकवरी रेट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसका क्या फॉर्मेट होता है पहले एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक्टिविटी लिखते हैं, फिर उसके बाद हम कॉस्ट पुल लिखते हैं, फिर कॉस्ट ड्राइवर लिखते हैं हम, फिर क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर लिखा जाता है, क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, एंड फाइनली हम एबीसी रिकवरी रेट लिखते हैं। यही करते हैं जब भी हम एबीसी निकालते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमें इसका वेरिएंस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत ध्यान से। कितने कॉलम बनेंगे? 3 कॉलम। हमेशा अगर आपके पास 4 एक्टिविटी है तो चारों एक्टिविटी के लिए आपको अलग अलग वेरिएंस कंप्यूट करने पड़ेंगे, है ना। हर में क्वांटिटी इनटू प्राइस ना बोल के बस यहां पे मैं क्वांटिटी इनटू रेट बोल दूंगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना बेटा। पहले कॉलम में आपको पता है कौन सी क्वांटिटी आती है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बाकी सभी कॉलम में कौन सी क्वांटिटी आती है? एक्चुअल क्वांटिटी। लास्ट कॉलम में कौन सा रेट आता है? एक्चुअल। तो यहां पे चूंकि ओवरहेड की बात आ रही है इसलिए हम इसको एक्चुअल रेट ना बोल के एक्चुअल रिकवरी रेट बोलेंगे। और सभी जगह फिर क्या आएगा? स्टैंडर्ड रिकवरी रेट। क्या हुआ बेटा? हर कॉलम मल्टीप्लाई हुआ किससे? 2 चीजों से। क्या क्या? क्वांटिटी और रेट से, है ना। आप रिकवरी रेट बोलते हो, एक्चुअली ज्यादा प्रॉपर वर्ड है, बिकॉज जब भी हम ओवरहेड में बात करते हैं तो हम ना प्राइस बोलते हैं ना रेट बोलते हैं, वी कॉल्ड इट एज रिकवरी रेट। तो पहले कॉलम में कौन सी क्वांटिटी आती है? स्टैंडर्ड। हर कॉलम में एक्चुअल, लास्ट कॉलम में एक्चुअल, बाकी सब कॉलम में स्टैंडर्ड, है ना। तो एक बार जल्दी से वापस से मुझे बताना कैसे क्या बना। कितने कॉलम बने बेटा? 3 कॉलम बने। हर कॉलम 2 चीजों का मल्टीप्लीकेशन, क्वांटिटी इंटू रिकवरी रेट, क्वांटिटी इंटू रिकवरी रेट, क्वांटिटी इंटू रिकवरी रेट। ठीक है। हाँ, पहले कॉलम में कौन सी क्वांटिटी? स्टैंडर्ड। बाकी सभी कॉलम में एक्चुअल। लास्ट कॉलम में कौन सा रेट? एक्चुअल। बाकी सभी में स्टैंडर्ड रेट। सिंपल है। अब ध्यान देना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ये एक्चुअल रिकवरी रेट तो आपको दिया होगा, स्टैंडर्ड रिकवरी रेट भी आप निकालोगे। ये जो हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी, ये किसकी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं? चाहे एक्चुअल क्वांटिटी हो चाहे स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो, ये हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ड्राइवर की। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, while this is the actual quantity of cost driver consumed for actual output। लिख लो ना बेटा इसको। एक काम करो, इसको अल्फाबेट ए नाम दे दो और इसको अल्फाबेट बी नाम दे दो। लिखो बेटा इसके बारे में ए और बी, बाद में आप भूल जाओगे इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट इसका लॉजिक है। लिखिए, एसक्यू इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर SQ is standard quantity of cost driver
और पूरा वीडियो प्रॉब्लम दे रहा है आज। बेटा देयर इज सम इंटरनेट इशू गोइंग ऑन, सो उसके कारण वो प्रीवियस थोड़े से 2 और 4 मिनट डिस्टर्ब हो गया था। कैन यू प्लीज टेल मी बेटा एट विच स्टेज द वीडियो वाज स्टॉप so that I can continue from that one? At which stage the video was stopped, beta? Have you properly discussed the expenditure and the efficiency variance? Please communicate to me, beta. Have you written this point from the screen regarding the expenditure and efficiency variance? Have you written what do you mean by SQ? What do you mean by AQ? Please communicate to me, beta. Have we written that XQ is a standard quantity of cost driver required for actual output? And B point is AQ is actual quantity of cost driver consumed for actual output. Whether you have written the same, beta? Yes or no? Okay, beta. It stopped when we were about to write. Okay, beta. Please write it down, beta. ये जो आपको मैंने ये लिखाया हूं ए पॉइंट और ए बी पॉइंट जो अपन ने दिया है इसके बारे में लिखिए बेटा। ए पॉइंट के बारे में लिखिए, प्लीज राइट डाउन। SQ is ए पॉइंट दे दीजिए आप। SQ is standard quantity of raw material, standard quantity of cost driver SQ is standard quantity of cost driver required for actual output. Standard quantity of cost driver required for actual output. Now write down B point बेटा। B point किसके लिए था? AQ के लिए था। B point था AQ के लिए। B point लिखिए AQ is actual quantity of cost driver, actual quantity of cost driver
consumed, actual quantity of cost driver consumed for actual output. Actual quantity of cost driver consumed for actual output. So अब आपको यही ध्यान रखना है बेटा, जो भी आप रेट लिख रहे हो, दिस इज द रिकवरी रेट, स्टैंडर्ड रिकवरी रेट. क्या मैं स्टैंडर्ड रिकवरी रेट तो बजटेड रिकवरी रेट बोल सकता हूं? Can you please tell me, beta, yeah, with yes or no, whether I can communicate standard recovery rate as budgeted recovery rate? Whether I can call standard recovery rate as the budgeted recovery rate? Yes, because budget and standard are interchangeable except in totality. है ना? तो चलिए बेटा. So अब आप एक काम करें. I'm taking some risk that I already tell you the concept, and now it's your time to apply that concept in a practical question. आप इसको एक बार rough page में try कीजिए बेटा. Then I will solve this complete question with you बेटा. लेकिन अभी आप एक बार इसको rough page में solve कीजिए. And remember, beta, we do not require the budgeted quantity. We require the standard quantity based on actual output. So this is the actual output. And what is cost driver in this particular quantity? Customer delivery. So it will be standard quantity of customer delivery required for actual output. And this is the actual quantity of customer delivery consumed for actual output. है ना? तो सबसे पहला आप एक काम करेंगे. First of all, prepare a statement. And filling the blank, जो आपको दिया हुआ है, just write it. Try to find out which is not readily available in the question. So I'm giving you a bit of 4 to 5 minutes from where. So give me the answer of illustration number 2 based on our system of finding out the variances. Okay, चलिए. First of all, beta, prepare the statement, and in that statement, whatever details are being given to you, just note it down and then try to find out what has not been provided by the question. So it will be very easy for you to solve the question.
And whenever you are done with the question, beta, please communicate to me so that we can start the question. Okay, everyone? Whenever you have completed the same, please communicate to me. When you are completed, beta, please communicate to me so that I can start the question. Okay, beta. So can I start? तो देखिए, सबसे पहले how many columns will be prepared? First of all, divide that one. There will be 3 columns. Correct है? Column number 1, column number 2, and column number 3. Every column will be a multiplication of quantity into recovery rate, quantity into recovery rate, and quantity into recovery rate. This is the basic statement. First quantity standard, actual, actual, last rate actual, and that will be the standard. So क्या हमें actual quantity of cost driver दिया है? Yes. देखिए बेटा, तो हम सबसे पहले ये स्टेटमेंट बना लेंगे, ठीक है। इस स्टेटमेंट में फिर हम डिटेल फिलअप कर देंगे अब कि whether AQ is given to you. Yes, we have been given that AQ, actual number of customer deliveries 19, so I will write 19 here. And we have been given the actual quantity of cost driver multiplied by actual recovery rate as 3900. अगर आप निकालना चाहे, if you want to find out, then you can find out 3900 divided by 19. It is 205.26. क्लियर है? अब स्टैंडर्ड रिकवरी रेट निकालना बहुत आसान है. टोटल ओवरहेड इज 4000 while the budgeted customer delivery is 20. So 4000 divided by 20 करें, कितना आ रहा है? 200. Okay, and what is SQ? Standard quantity of cost driver for actual output. तो जरा चेक कीजिए बेटा, 2000 यूनिट्स हम डिलीवर करते हैं कितने कस्टमर डिलीवरीज में? 20. So find out how many units has been delivered in one customer delivery. If 20 deliveries are required for 2000 units, it means in every customer delivery
we deliver 100 units. So what if the actual output? The actual output is 2100 units. So her a customer delivery per, if we deliver 100 unit, then for 2100 unit delivery, how many customer deliveries are required? 21. क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है बेटा? 21 पॉइंट क्लियर है? 2000 यूनिट्स के लिए अगर हमें 20 डिलीवरीज की जरूरत पड़ती है, सो फॉर एक्चुअल आउटपुट ऑफ 2100, हाउ मेनी कस्टमर डिलीवरीज आर रिक्वायर्ड? 21. फॉर 21 into 200, इट इज 4200 रुपी. ये आ गया आपका 4200. दिस इज 3800. So the difference between column number 2 and 3 is related to recovery rate. So it will be the expenditure variance of 100 adverse. And here the quantity of cost driver is related. So it will be the efficiency variance and it's 400 favorable. बहुत ही simple है बेटा, nothing special. The only point you have to keep in mind that we are finding out the quantity of cost driver. है ना? ये अगर आपने पॉइंट ध्यान में रख लिया, then it's very easy to deal the variance in ABC environment with this particular statement. If you are having any doubt, beta, I am waiting for that. Please communicate to me, beta. I think beta screen is proper now. Really apologies, beta, for multiple distraction today due to the net failure. ये समझ में आया बेटा? Any doubt? Whether this point is clear to each and every student? Can I assume that one? Please communicate beta. Any doubt or we can proceed further? Clear है? चलिए बेटा. So we will start with some more questions on this. आई बेटा, आपको एकदम एंड पे दिया होगा फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन. We are done till question number 4, I think. Question number 1, 2, 3, and 4. And I have given you one question on homework. Question number 4. Have you completed that one, beta? Because it's a replica of question number 1. How many of you have completed that question number 4? Please communicate to me, beta. Because it's a very important question, है ना? Question number 1, either you should do it or question number 4. Because both the question are of similar variety, but one of them you must do even in the last day before revision. So we are done. Question number 4. Now I am giving you beta some time to provide me the answer of question number 6. यहाँ पे आपके पास 3 एक्टिविटी है बेटा. तीनों एक्टिविटी के लिए आपको सेपरेटली वेरिएंस निकालना पड़ेगा. It means you have to find out a total of 6 variances. 2 variances for indirect activity material, 2 variances for product testing, 2 variances for energy. So the best way to deal with this question is to assume that this is not a single question. There are 3 individual questions. So I'm giving you time, beta. 5 to 7 minutes I'm giving to you. Please provide me the answer of each and every activity. इसका efficiency variance क्या है and what is the expenditure variance. Okay? चलिए, समय आपके पास बेटा, मुझे आंसर दीजिएगा आप.
treat it as 3 separate questions, beta, na? And then you will provide me comfortably the correct answer of all the 3 activity variances. And please communicate to me, beta, whenever your all the 3 variances are completed. Okay. Okay, Dikshit, beta, he has provided me all the answers of all the 3 activity. Other student, beta, whenever you have completed the same, please communicate to me. Okay, beta, Aniket. Other student, beta, please communicate your answer. Okay, beta, so can I solve this one? So, देखिए, standard quantity multiplied by standard recovery rate
actual quantity multiplied by standard recovery rate, actual quantity multiplied by actual recovery rate. This is the funda. तो हमें तीनों एक्टिविटी के लिए सेपरेटली फाइंड आउट करना है बेटा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ वी आर हैविंग 3 एक्टिविटी देन ऑल द कैलकुलेशन विल बी डन सेपरेटली फॉर ऑल द 3 एक्टिविटीज. तो देखिए हमें एक्चुअल कॉस्ट दिया हुआ है ये 9,40,000. we did not have to calculate the same, it is given to us. हमें एक्चुअल क्वांटिटी दिया हुआ है इसकी 48,000. स्टैंडर्ड रिकवरी रेट भी हमें दिया हुआ है. ये सब चीजें रेडीमेड अवेलेबल है. फिर अगर मैं सेकंड की बात करता हूं, सो द टोटल हैज बीन गिवन टू मी 22,50,000. ओके, व्हाट इज द एक्चुअल टेस्ट मिनट? इट हैज बीन गिवन 7,40,000 multiply by 3 rupee. Okay, and the last one is 70,000. The minutes are 3,60,000 multiply by 0.2. Multiply by 0.2. So the only thing you have to find out in all the activity is the standard quantity of cost driver consumed for actual output. है ना? So what is the actual output beta? Company has produced 80,000 units in the last quarter. और मेरे ख्याल से क्वार्टर का ही दिया. Yes. So 80,000 into 0.5. So it will be 80,000 into 0.5. Okay. Then it will be 80,000 into 10. Very easy. And then it will be 80,000 multiplied by 4. This all are the standard quantity of cost driver required for actual output. So I don't think beta there is any single issue. आप सोचिए ना बेटा, ये पूरा चैप्टर में बताऊं, इस स्टेटमेंट के कारण it's superbly simple. If you do not follow this methodology, from my personal point, it will be very difficult to tackle this particular chapter. But we have considered it in basic. In the last lecture, we have applied this complete statement to calculate the planning and operational variance. Today, we have applied this statement to find out standard costing with learning curve. And now we are doing this statement to find out the variances in ABC costing. So this is of tremendous usefulness of this particular statement, because you have to only handle the remaining part. The variance computation part will be done by this statement trick. है ना? तो मेरे हिसाब से बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आए, जो मैंने आपको तरीका बताया, वॉट एवर मेथड आई सजेस्टेड यू, फॉलो दैट मेथड ब्लाइंडली बेटा, बिकॉज इट विल बी प्रोवाइड यू द मच नीडेड कॉन्फिडेंस टू टैकल द क्वेश्चन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. अभी आगे भी आप चलेंगे ना बेटा, द सेम मेथड विल अप्लाई. सिर्फ 3 रूल आपको याद रखने हैं एंड नथिंग टू रिमेंबर अपार्ट फ्रॉम दैट. This is the true magic of this particular statement. है ना रश्मि? ओके बेटा, चलिए. सो एक और क्वेश्चन आप कर लीजिए, देन वी विल टेक अ ब्रेक बेटा ना. अभी ब्रेक की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा लेक्चर भी थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था. फिर बेटा उसको इंटरप्रेट करना है एफिशिएंसी वेरिएंस को इन रिस्पेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल. वो फेवरेबल है या एडवर्स है, आपको ये बताना है ना. इट्स वेरी सिंपल. मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा. ये अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन है. एंड रिमेंबर वंस अगेन, द कॉमन एरर यू अ स्टूडेंट कैन कमिट इन दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद द बजट. एक्चुअल विल बी कंपेयर्ड विद बजट ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ सेल्स वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस. अदरवाइज एक्चुअल विल बी कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड. है ना? तो ये एक क्वेश्चन है बेटा जो आपको प्लानिंग और ऑपरेशनल भी बोल रहा है, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आपको एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी भी बता रहा है. So what we have studied in the last session is asked in requirement part number 1. What we have studied in today's session, that has been asked in requirement part number 2. तो मेरे हिसाब से बेटा आपको इसको करने में 7 to 8 minutes लगना चाहिए. So I am giving you sufficient time so that student can comfortably solve this particular question. है ना? इसके बाद फिर अपन ब्रेक लेंगे बेटा ना. Before that, please solve this particular question. Read out the question in the coming 3 minutes and then devote 5 to 6 minutes for following requirement part number 1 and requirement part number 2. And the last hint I want to provide, whenever you are finding out planning and operational variance, first write down the formula, original standard with revised standard, and in operational it's revised standard with actual. ठीक है? चलिए.
Still 5 minutes left, beta. Take your time. First, solve the requirement part number 1 for planning and operational variances.
Whenever you have completed the same beta, please provide me the answer. Okay. For requirement part number 1 and for requirement part number 2, whenever you have completed, take your time beta. If it is not solved, you can take your time because it's a lengthy question. It might take some more time at your end. Okay, Shrivani has provided me the answer of first part, and Rashmi has also provided me the answer of first part. Okay, beta. I'm waiting for answer of other students also.
Okay, beta. I have got the answers from many students. Just I will provide you the discussion part. So सबसे पहले हमें प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस बोला है, ठीक है. They have themselves provided that these are the original standard and these are the revised standard. So what is the actual output? Actual output is 1,10,000. These are the actual detail given to you. 2,50,000 is the actual quantity and this is the actual price. And based on 1,10,000, we will determine the original standard and the revised standard. So 1,10,000 multiply by 2. So 2,20,000 will be the original standard quantity and the original standard price is 30 per kg. While 1,10,000 multiplied by 2.25 is the revised standard quantity of raw material and the revised standard price of raw material is 31 per kg, है ना. So देखिए बेटा, ओरिजिनल स्टैंडर्ड, रिवाइज स्टैंडर्ड और एक्चुअल. ओरिजिनल स्टैंडर्ड आएगा हमारा 1,10,000 multiply by 2 multiply by 30 and revised standard is 1,10,000 multiply by 2.25 into 31 और एक्चुअल तो आपको दिया हुआ. Similarly with labor, 1,10,000 multiply by 0.25, 15 minutes means 0.25 hour and the rate of labor is same. There is no change, 300 रुपी. और इसी प्रकार से फिर आप रिवाइज निकाल लेंगे, 12 मिनट्स मतलब 0.2 hours. Okay, and now you are having two activity, so there will be total 4 variance. 2 variance, expenditure and efficiency for material handling and expenditure and efficiency for setup. Any doubt beta in this particular question on that particular point, then I will focus on. Please communicate beta. Rashmi, Shrivani, Dikshit, Bhaumik, Aniket Jain, Shyam Kumar. Any doubt beta in any of the point? Please communicate to me. I will tell you how to calculate that point properly. If there is no doubt beta, we can take the break and then afterward we will solve further more questions on this particular topic of standard costing. How many of you have seen the January 2023 student newsletter? There are superb case study given in that January 2023 edition beta. How many of you have gone through that case studies given in January 2023 student newsletter? Please communicate to me beta. सेटअप रन नहीं आया, अनिकेत भाई को सेटअप रन नहीं आया. देखो बेटा, है ना, सेटअप रन कैसे हम सॉल्व करेंगे? वी रिक्वायर 2 पॉइंट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रिकवरी रेट, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रिकवरी रेट एंड एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रिकवरी रेट. ये तो बेटा आपको दिया हुआ है 2,36,000 रेडीमेड, अनिकेत भाई ये दिया हुआ है. अब आपको चाहिए एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, ये भी आपको दिया हुआ है 2,100. यू कैन फाइंड आउट द स्टैंडर्ड रिकवरी रेट बाय दिस 2 पॉइंट, 2,24,000 रुपी डिवाइडेड बाय, नहीं 2,24,000 रुपी डिवाइडेड बाय 2,000, नॉट 8,000, डिवाइडेड बाय 2,000. सो इट्स 112, है ना. आप ध्यान दीजिएगा बेटा, अनिकेत कितना बजटेड आउटपुट था बेटा? 1 लाख यूनिट. कितने सेटअप थे उसके लिए? 2,000. So 1 lakh divided by 2,000, it means in every production run we are supposed to manufacture 50 units. How many units has been manufactured? 1,10,000. So in a production run 50 units is to be manufactured. So in 1,10,000, how many production run are required? 2,200 production runs are required to manufacture 1,10,000 units. Okay, Aniket? रिवाइज स्टैंडर्ड रेट इज नथिंग बट बेटा, रिवाइज स्टैंडर्ड रेट का मतलब है RFR. RFR कहां पे लिखा हुआ मैंने बेटा? RFR तो कहीं पे लिखा ही नहीं है बेटा मैंने.
Shyam Kumar, beta, please elaborate your doubt, beta. I am not getting that point. That is revised standard rate, beta. If in the operation, if in the planning variance the rate has been changed, that rate is known as revised standard rate. If in the planning variance some situation happens in which the situation changes, so that revised rate is known as revised standard rate. Okay, Shyam Kumar. So, beta, we are having 3 case study session starting from next week. Tomorrow also we are having a session on standard costing. Tomorrow will be the last day of the standard costing, and the last 3 session that has been planned for the next week is dependent on case study. So I am thinking that we will start the case study from January 2023 newsletter, because those are the super case study drafted by the faculty. I think Deepak Gupta sir have beautifully drafted that case study. Definitely, if we gone through that case study, now our understanding towards solving the case study will be definitely improved by that data. So I'm planning to start with January 2023 student newsletter whenever our case study session will start from the next week. Beta. Okay, so let's take a break of 15 minutes, beta. It's 19:55. We will take break till 8 बज के 10 मिनट तक हम break लेते हैं 8:10 तक, and then we will start some more question on this particular topic. And if that question is over, then we will start altogether new topic in standard costing. Okay, so take a break till 8:10.
ओके भाई, थैंक यू। चलिए बेटा, वेलकम बैक। अब अपन कुछ स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन। आइए आप क्वेश्चन नंबर 10 में, प्लीज स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 available in page number 10.57. It's a super question. Question number 10 हमेशा ही आपको लास्ट डे बिफोर रिवीजन में रखना है बेटा। सुपर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। स्टार्ट करूं क्वेश्चन, देखिए। T-Tech is a Taiwan based firm. पेज नंबर 57 है बेटा, पेज नंबर 57। इट्स क्वेश्चन नंबर 10। Okay, so T-Tech is a Taiwan-based firm that designs, develop, and sell audio equipment. Founded in 1975 by Mr. Boss, the firm sells its product throughout the world. Company is best known for its home audio system and speaker, noise cancelling headphone, professional audio system, and automobile sound system. Extracts from the budget are shown in the following table. Okay, so we have been given the budgeted detail of home audio system division for the month of January 21. I have already told you bit at this point that in case of time dependent variance, actual time and budgeted time must be same. If they are not same, then the budgeted time period has to be converted according to the actual time period, then only the data is comparable. So the budget is given for January 21. If actual is also given for January 21, then there will be no issue. Okay, so I am having two products, 3000 WPMPO, 5000 WPMPO. This is the budgeted quantity of product 1, product 2. This is the budgeted sale price. This is the standard cost given on per unit basis. Okay. The managing director has sent you a copy of an email he received from the sales manager K. MD ने आपको एक मेल किया है, मेल उसे मिला था सेल्स मैनेजर के से। क्या बोल रहा है? वी हैव हैड एन आउटस्टैंडिंग मंथ। कौन बोल रहा है? सेल्स मैनेजर के। देयर वाज एन एडवर्स सेल प्राइस वेरिएंस ऑन द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ 22,50,000। जो पहला प्रोडक्ट है इसकी सेल प्राइस हमने सोचा था 18,18,750। यहां पर एडवर्स प्राइस वेरिएंस है, मतलब इस प्राइस से हमारी एक्चुअल प्राइस कम रही। कितने से एडवर्स सेल प्राइस वेरिएंस है? 22,50,000। बट आई कंपेंसेटेड फॉर दैट बाय रेजिंग द प्राइस ऑफ 5,000 WPMPO। लेकिन जितना सेल वेरिएंस यहां पे आया ड्यू टू रिडक्शन इन द सेल प्राइस, उतना से ही मैंने सेकंड प्रोडक्ट की सेल प्राइस बढ़ा के कंपेंसेट कर दिया, तो ओवरऑल सेल वेरिएंस 0 रहा। यूनिट सेल ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट वर एज एक्सपेक्टेड, मतलब जितनी यूनिट सोची गई थी उतनी यूनिट उसकी एक्चुअली बेची गई। बट सेल ऑफ द सेकंड प्रोडक्ट वर एक्सेप्शनल एंड गिव अ सेल मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस ऑफ 23,75,000। आई थिंक आई डिजर्व अ बोनस। ये पूरी किसकी वर्डिंग है? सेल्स मैनेजर के, जिसने किसको ये स्टेटमेंट भेजा? एमडी को। एमडी हैव फॉरवर्डेड दिस स्टेटमेंट टू अस। मैनेजिंग डायरेक्टर have asked for your opinion on this figure. You got the following information. Actual unit 1500 सेल हुई, 600 सेलिंग प्राइस, दिस आर सब एक्चुअल डिटेल है बेटा, जितनी भी दिया ये एक्चुअल डिटेल है। टोटल मार्केट डिमांड फॉर 3000 WPMPO was as budgeted। पहले प्रोडक्ट का जितना मार्केट डिमांड सोचा गया था उतना ही था, बट एज ए रिजल्ट ऑफ सप्लायर रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ सपोर्टिंग UHD टीवी सिस्टम, है ना, तो कोई UHD टीवी सिस्टम लगता होगा, जिसके कारण टोटल मार्केट शेयर फॉर द सेकंड प्रोडक्ट रेज्ड बाय 50% इन January 21। ओके, द कंपनी हैज सफिशिएंट कैपेसिटी टू मीट द रिवाइज्ड मार्केट डिमांड फॉर 750 यूनिट्स ऑफ इट 5000 WPMPO and therefore maintain its market share। आपको निकालना है, कैलकुलेट द फॉलोइंग ऑपरेशनल वेरिएंसेस बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड मार्केट डिटेल
जिसमें सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस निकालना है एंड सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है। तो क्या करना है बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड आउट दिस क्वेश्चन वंस अगेन, पहला काम है ना। सबसे पहला काम आपको करना है कि रीड आउट करना है क्वेश्चन को वंस अगेन। सेकंड, आपको सेल्स मार्जिन से रिलेटेड स्टेटमेंट बना लेना है, और दो प्रोडक्ट है तो टोटल 4 कॉलम बनेंगे बेटा। थर्ड, जो भी कुछ आपको दिया हुआ है फिल दैट अप, और जो नहीं दिया फिर उसको निकालने की कोशिश कीजिए, है ना। तो ट्राई कीजिए बेटा एक बार अपने आप, बहुत कुछ नया सिखा के जाएगा दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। माय फेवरेट क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान से करिएगा बेटा, समय लग जाए 2 मिनट्स ज्यादा लग जाए कोई इश्यू नहीं, बट प्लीज 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 सॉल्व दिस क्वेश्चन विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन। ओके, चलिए समय देता हूं बेटा मैं आपको, करिए एक बार आप ट्राई अपने लेवल पे।
Now, beta, you should start preparing that statement of sales margin variance, and whatever has been given to you, just write it down. And then you will be automatically able to find out what missing information is there. Last 3 to 4 minutes available with you, beta. Try to provide the answer within that time period. Last 2 minutes, beta. Please provide the answer within that time. Okay. Last 2 minutes available with you.
Please provide me the answer, beta. Shrivani, Aniket, Shyam Kumar, Rashmi, Dikshit, Bhaumik, please provide me the answer for this particular question. Last 1 minute, beta. I have extended 1 more minute so that all the student can comfortably provide me the answer. अब इससे ऊपर नहीं मिलेगा बेटा ना. लास्ट 1 मिनट, जितना आया उतना आंसर दे दीजिए आप मुझे. ओके बेटा श्रीवानी, आई विल टेल दिस कंप्लीट क्वेश्चन इन डिटेल बेटा. अब बहुत बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, कैसे सॉल्व करना है इसको. सबसे पहले आप ये बताओ बेटा, आपको यहां पे सेल से रिलेटेड वेरिएंस निकालना है. तो सबसे पहले मैं सेल से रिलेटेड स्टेटमेंट बना लूंगा. इन सेल्स वी आर हैविंग टू अप्रोच, टर्नओवर अप्रोच एंड मार्जिन अप्रोच. व्हाट्स द रिक्वायरमेंट पार्ट? द रिक्वायरमेंट पार्ट इज रिलेटेड विद मार्जिन अप्रोच. चलिए ध्यान दीजिए बेटा, कैसे करना है. सिंस देयर आर टू प्रोडक्ट, देयर विल बी 4 कॉलम्स. Every column will be a multiplication of output into margin. Output into margin. The first column will be of budgeted output, remaining will be of actual output. The last column will be of actual margin, while the remaining will be of budgeted margin. And the second column will be related to revised actual output. Okay. We have been asked to provide this two information. क्या क्या पूछा है बेटा रिक्वायरमेंट पार्ट देखिए. What they have asked from us, they have asked two things. The first one is sales margin mix variance and sale margin volume variance. Okay, दो चीजें हमसे पूछा है. एक मार्जिन मिक्स पूछा है और दूसरा
मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस पूछा है। तो इसको हम हटा देते हैं बेटा, इसका कोई रोल नहीं है। फिर ये दो चीजें आपसे पूछा है बस, सेल्स margin volume variance they have asked from us, and sales margin mix variance they have asked from us. ओके, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है बेटा? क्या बजटेड मार्जिन हम पता लगा सकते हैं? बिल्कुल पता लगा सकते हैं। और बजटेड मार्जिन कैसा आएगा? बजटेड सेल प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट। तो लीजिए बेटा, बजटेड सेल प्राइस कितनी है आपको दिया हुआ है। व्हाट इज द बजटेड सेल प्राइस? What is the budgeted sale price, beta? That has been given in the very first statement. That is 18,750 minus 12,500. So 6250 is the budgeted margin for first product, and for second product it's 50,000 minus 26,250. So it's 23,750 है ना। तो सबसे पहले इसी को लिख दीजिए बेटा, 6250 and 23750, 6250 and 23750. So it's 6250 and 23750. I already told you beta multiple times, whatever has been given in the question, just note it down. It's the primary step towards solving such type of typical question. तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है बेटा ये 1500 रुपए है, 1500 यूनिट है, यहाँ पे 600 यूनिट्स है। ओके, अब और भी कुछ आपको दिया है क्या? नहीं, आपको ये दोनों चीजें तो अपने लेवल पर निकालना है। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल फाइंड आउट, RAO। RAO का मतलब एक्चुअल आउटपुट इन budgeted ratio, actual output in revised ratio, that is budgeted ratio. What is the actual output? Actual output is 1500 plus 600, total कितना बेटा? 2100. Now this 2100 is to be divided into budgeted ratio. What is the budgeted ratio? 1500 is to 500 is the budgeted ratio. ये हमारा बजटेड रेशियो है पक्का। 1500 is to 500 is the budgeted ratio. क्या सही है बेटा? एनी डाउट इन दिस पॉइंट? 1500 plus 500 is the budgeted ratio. एनी डाउट इन दिस पॉइंट? बजटेड रेशियो में कोई डाउट है बेटा? बताइए मुझे आप। प्लीज कम्युनिकेट विथ यस और नो बेटा। देयर हैज टू बी डाउट बेटा, ये वाला पॉइंट गलत है। द बजटेड रेशियो शुड बी 1500 is to 750. That is, it will not be 3:1. ये गलत हो जाएगा। The correct will be 2:1. Tell me why. Tell me, provide me the reason. 1500 is to 500. That will be the wrong answer. The 2100 is to be divided into 1500 is to 750. That is in the ratio of 2:1. Provide me the answer, beta. Provide me the logic. Why I have taken 1500 is to 750, not 1500 is to 500. Please provide me the logic. Yes, beta Shrivani, rightly identified by you. See the requirement part of the question. In the requirement part of the question, they have given us 2 hints. Although one hint is more than sufficient to take the budgeted ratio of 1500 is to 750.
First of all, they have used the word operational. In operational, we compared the revised standard with actual, and the revised standard is 750 यूनिट एंड 1500 यूनिट. ये सेम ऐसा ही रहा, लेकिन ये चीज बदल चुकी थी. 50% से मार्केट बढ़ चुका था. So in operational variance, we will not compare original standard. Original standard is 1500 is to 500, while the revised standard is 1500 is to 750. This is the first point. Second point, they have also clarified it by revised market detail लेना. तो लिखिए बेटा इस पॉइंट में आप, प्लीज राइट डाउन इन दिस पॉइंट why it is wrong. लिखिए बेटा इसमें आप जो अपने क्रॉस किए है ना, वहां पे लिखिए ये क्यों गलत हो रहा है. लिखिए स्टार बना के बेटा कहीं पे. This is the original budget ratio. This is the original budget ratio. While this is the original budget ratio, while in the requirement part of the question, in the requirement part of the question, we are supposed to find out, in the requirement part of the question, we are supposed to find out operational variances. We are supposed to find out operational variances. That is comparing the actual detail, that is comparing the actual detail with the revised standard. Comparing the actual detail with the revised standard. ओके, सो अब बता दो बेटा रेशियो के हिसाब से कितना आ रहा है. 1400 और 700. ठीक है, तो ये आ गया आपका 1400 और 700. और यहां पे भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी आपको ऑपरेशनल के हिसाब से रिवाइज लेना पड़ेगा. तो इट विल बी 750, इट विल नॉट बी 500, क्योंकि आपको ऑपरेशनल वेरिएंस निकालना है ना. तो अब इसका टोटल लगाइए बेटा, कितना टोटल आ रहा है तीनों कॉलम का. देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट फोर्थ कॉलम since we are supposed to provide only two variances. So it will be 2 crore 71 lakh 2 crore 71 lakh 87,500. It is 2 crore 53 lakh 75,000. It is 2 crore 36 lakh 25,000. ओके बेटा, तो आपको दो वेरिएंस निकालना था. पहले मार्जिन निकाल लेते हैं अपन. So it will be 17,50,000 फेवरेबल. एडवर्स ये फेवरेबल नहीं बेटा, मैंने आपको बताया था अगर बजट ज्यादा है और एक्चुअल कम है सो इट इज नॉट फेवरेबल, इट इज एडवर्स, है ना. ये हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा. और यहां पे 271 87,500 माइनस 236 25,000, so it is also adverse. 35 lakh 62,500 will be a adverse variance. बहुत कॉमन गलती है बेटा इसमें, क्योंकि वो पॉजिटिव सिंबल आता है तो अपने को लगता है फेवरेबल है, जबकि बजट ज्यादा होना और एक्चुअल कम होना इज ऑलवेज अ इंडिकेशन ऑफ एडवर्स सेल्स वेरिएंस. ओके बेटा, चलिए. सो नाउ इन द नेक्स्ट सेशन बेटा we will complete this chapter. In the next session we are starting the very first topic, that is reconciliation statement. What is reconciliation statement?
Can you please tell me, beta, what do you mean by reconciliation statement? Reconciling two data. So in standard costing, there is a reconciliation statement in which we will reconcile the budgeted profit with the actual profit. And what's the difference between budgeted and actual profit is due to the variances. है ना? जब भी हम reconciliation statement बनाएंगे, we are comparing the budgeted profit with the actual profit, and to provide the insight why there is a difference between the budgeted profit and the actual profit, we will find out different variances. We will find out different variances such as material variances, labor variances, variable overhead, fixed overhead, sales variances. And for preparing the reconciliation statement, we are having three types. We are having three techniques. The first one is the absorption costing. The second one is the marginal costing. And the third one is the relevant costing. And in examination, all the three methods have been asked from the student that you have to reconcile the profit, not only through absorption costing, but also through marginal costing, but also through relevant costing. है ना? So लिखिए बेटा, थोड़ा सा लिख देते हैं, and in next session we will start the sheet. Please write down. Oh yes, strategic profitability concept भी बाकी है बेटा. Yes, Shivani beta, please remind me in the next session, that is tomorrow beta. I will definitely provide you the concept related to strategic profitability analysis. In chapter number 5, we have dropped one topic that is known as strategic profitability analysis, because that is related with standard costing. Okay, Shivani, so it's your responsibility beta that you should revise me in the tomorrow session in the start of the period, so that I will manage the time and also provide you the output related to that topic. Please write down beta, reconciliation statement. Write down first point. We are reconciling the budgeted profit. We are reconciling the budgeted profit with the actual profit. We are reconciling the budgeted profit with actual profit. Write down second point. To find out the difference in profit, comma, we will find out different variances. That is raw material variances, comma, labor variances, comma, variable overhead variances, comma, fixed overhead variances. And very important beta, this word is very important, sales margin variances. Underline the word margin. Sales margin variances. Now this is very important. In sales, we are calculating two types of variances. The first one is the turnover impact, and the second one is the margin impact. Why I am considering only the margin impact? The reason is very simple, because in the reconciliation statement, we are comparing the budgeted profit with the actual profit. Comparison of profit is there. So
we have to take the approach of margin related to sale, because turnover approach doesn't reflect the profit. So हमें अगर profit पे impact देखना है, so we have to consider only and only the sales margin variances. Clear beta? So the remaining part we will definitely discuss in the next session, that is tomorrow. And tomorrow is the last day of this chapter. And after that, we are having 3 case study sessions, and we will start with the case studies that have been given in January 2023 newsletter. Super case study drafted beta. है ना? चलिए. So thank you for watching the session, beta. We'll meet you tomorrow. God bless you all.